वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इस लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम लेआउट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर है कंसर्न विद लेआउट डिसीजन। ठीक है, अच्छा लेआउट क्या होता है? जो लेआउट से रिलेटेड डिसीजन होती हैं किसी भी बिजनेस में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेआउट का बेसिकली मतलब क्या है? लेआउट की जब हम बात करते हैं तो लेआउट बेसिकली रेफर्स टू कि आप जिस जगह पे काम करें, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों की अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब है कि फिजिकल अरेंजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, उस कमरे का लेआउट का मतलब ये है कि उस कमरे में कितनी मेज़ कुर्सी हैं, वो किस तरह रखी गई है। ठीक है, मेज़ दीवार के साथ है, कुर्सी जो है वो कहीं और पड़ी हुई है, शायद कोई सोफ़ा भी हो। ठीक है, इसी तरह ऑफिस में जो ऑफिस स्पेस होती है, ठीक है, वही बताती है कि ऑफिस का लेआउट किस तरह का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑफिस बड़े-बड़े हैं या छोटे ऑफिसेज़ हैं, ठीक है, ऑफिस में फर्नीचर कितना रखा होता है, स्पेसेस कितनी है बीच में, ठीक है, फर्नीचर के बीच स्पेस कितनी होगी। ठीक है, सो ऑल दीज डिसीजंस दे आर रिलेटेड टू लेआउट। ठीक है, लेआउट को इन सिंपल वर्ड्स आप समझ सकते हैं, इट रेफर्स टू स्पेस। ठीक है, यानी कि एक जगह, एक कमरे में या एक फैक्ट्री में कितनी स्पेस है और वो स्पेस किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, सो बेसिकली रेफर्स टू स्पेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस। ठीक है, तो लेआउट को समझने के लिए मैं आई वुड लाइक यू टू रीड द केस स्टडी। ठीक है, ये चैप्टर के बिल्कुल शुरू में चैप्टर नंबर 10 जो आपकी बुक का, उसके शुरू में एक केस स्टडी है। इसको आई वुड लाइक यू टू रीड दिस एज पार्ट ऑफ दिस लेक्चर एज वेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो केस स्टडी है इट्स रिलेटेड टू मैकडॉनल्ड्स, और ये मैकडॉनल्ड्स की लेआउट की बात कर रहा है, और वो मैकडॉनल्ड्स अपनी लेआउट को किस तरह चेंज करता है। वील रीड अबाउट दैट। ठीक है, तो केस स्टडी का नाम है मैकडॉनल्ड्स लुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू लेआउट। In its half century of existence, McDonald's revolutionized the restaurant industry by inventing the limited menu fast food restaurant. It has also made seven major innovations. The first introduction of indoor seating was a layout issue, as was the second, drive-through windows. The third, adding breakfast to the menu, was a product strategy. The fourth, adding play areas, was again a layout issue. In the 1990s, McDonald's completed its fifth innovation, a radically new redesign of the kitchens in its 14,000 North America outlets to facilitate a mass customization process. Dubbed the Made by You kitchen system, sandwiches were assembled to order with the revamped layout. In 2004, the chain began the rollout of its sixth innovation, a new food ordering layout, the self-service kiosks. Self-service kiosks have been infiltrating the service sector since the introduction of ATMs in 1985. Alaska Airlines was the first airline to provide self-service airport check-in in 1996. Most passengers of the major airlines now check themselves in for flights. Kiosks take up less space than an employee and reduce waiting line time. Now McDonald's is working on its seventh innovation. Not surprisingly, it also deals with restaurant layout. The company, on an unprecedented scale, is redesigning all 30,000 eateries around the globe to take on the 21st century look. The dining area will be separated into three sections with distinct personalities. The linger zone focuses on young adults and offers comfortable furniture and Wi-Fi connections. The grab and go zone features tall counters, bar stools, and plasma TVs, and the flexible zone has colorful family booths, flexible seating, and kid-oriented music. The cost per outlet a whopping 300,000 to 400,000 innovation fee. As McDonald has discovered, facility layout is indeed a source of competitive advantage. ठीक है, तो ये मैकडोनल्ड्स की बात कर रहा है और बता रहे हैं कि मैकडोनल्ड में लेआउट किस तरह का होता है। मैकडोनल्ड बेसिकली इट्स अ रेस्टोरेंट। ठीक है, तो कह रहा है मैकडोनल्ड की लेआउट की खास बात ये है कि मैकडोनल्ड ने इंडोर सीटिंग पहली बार इंट्रोड्यूस कराई थी इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ड्राइव थ्रू विंडोज इज ऑल्सो। ड्राइव थ्रू विंडोज क्या होती हैं कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, आप गाड़ी में आके पिक कर सकते हैं, और वो जो ऑर्डर आपको एक विंडो के थ्रू डिलीवर होता है। आपको रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाना पड़ता, गाड़ी में बैठी बैठी आपको ऑर्डर विंडो के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्राइव थ्रू विंडोज। ठीक है, और एक और चीज़ है एडिंग प्ले एरियाज। ठीक है, मैकडोनल्ड्स, किसी मैकडोनल्ड में प्ले एरियाज होते हैं जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। ठीक है, उसमें छोटे छोटे झूले बने होते हैं, बच्चे उसमें खेल सकते हैं।
So play areas is also part of McDonald's layout. उसके अलावा जो किचन है मैकडोनल्ड्स के उनका अपना एक लेआउट होता है। ठीक है, इसके अलावा दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेल्फ सर्विस कियोस्क होती है कि आप खुद उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। इट्स लाइक अ कियोस्क, एक मशीन होती है, यू जस्ट गो टू द मशीन, यू एंटर द ऑर्डर, ठीक है, और वो मशीन आपकी पेमेंट भी रिसीव कर लेता है और वहीं से आपका ऑर्डर आगे चला जाता है। देन यू जस्ट हैव टू गो एंड रिसीव योर ऑर्डर। इसके अलावा ये बात करें कि द डाइनिंग एरिया इन मैकडॉनल्ड विल बी सेपरेटेड इनटू थ्री सेक्शंस विद डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज। एक होगा लिंगर जोन, जहाँ पे यंग एडल्ट्स, जो बेसिकली लिंगर जोन जो यंग एडल्ट्स के लिए होगा, जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल होगा। फिर ग्रैब एंड गो जोन है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ खा के जल्दी जाना चाहते हैं। बार स्टूल्स है उधर में, प्लाज्मा टीवीज है, और उसके अलावा एक फ्लेक्सिबल जोन है जो फैमिलीज के लिए बेसिकली, इसमें फैमिली बूथ्स हैं। और यही जो लेआउट है मैकडॉनल्ड्स का, इट गिव्स इट अ कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है, so I'll just leave this case study for you to read. I'll just give you a few minutes to read through it.
स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने पढ़ ली हुई केस स्टडी, ठीक है। तो अगेन लेक्चर खत्म करने से पहले आई जस्ट गो थ्रू द मेन पॉइंट्स। मैकडोनल्ड्स के लेआउट की जो खास चीज़ वो यही है कि तो ड्राइव थ्रू विंडोज हैं मैकडोनल्ड्स में, और उसके अलावा प्ले एरियाज होते हैं, इंडोर सीटिंग है, उसके अलावा किचन को भी रीडिज़ाइन किया गया है, ठीक है। सेल्फ सर्विस कियोस्क इंट्रोड्यूस कराई गई मैकडोनल्ड्स में। इसके अलावा डिफरेंट जोन है, डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स के लिए डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स है। एक लिंगर जोन बनाया गया है जो यंग कस्टमर एडल्ट्स के लिए है। फिर ग्रैब एंड गो जोन है, ठीक है। दैन वी हैव अ फ्लेक्सिबल जोन व्हिच हैज कलरफुल फैमिली बूथ्स, ये बेसिकली फैमिलीज के लिए होता है। एंड दीज आर सम पिक्चर्स, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर सेल्फ सर्विस कियोस्क, ठीक है। एक कियोस्क होता है, जिस तरह एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ही इज जस्ट गोइंग टू द कियोस्क और अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व, ठीक है। यानी कोई बंदा आपका ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहा, आप सब इस मशीन पे ऑर्डर एंटर करते हैं और वो काउंटर पे चला जाता है। सी मैकडोनल्ड का किचन दिखाया गया, ठीक है। इट्स लाइक द किचन ऑफ मैनी रेस्टोरेंट्स, ठीक है, लेकिन इनका लेआउट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लिंगर जोन दिखाया गया जहाँ पे सोफाज हैं, ठीक है, हाँ शेयर्स हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल जोन है, बूथ्स विद कलरफुल फैब्रिक कुशंस, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द फ्लेक्सिबल जोन, ठीक है, ये वाला फ्लेक्सिबल जोन है, इसमें आप देख सकते हैं सोफाज वगैरह पड़े हैं। दिस एग्जांपल ऑफ दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्रैब एंड गो जोन, इसमें बड़े बड़े स्टूल्स के ऊपर लोग बैठते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स।